ऑलराइट गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। आज की वीडियो में हम जानेंगे वीड के बारे में। ऑफ कोर्स वर्ल्ड वाइड ये चीज़ हो रही है कि जेन जी जनरेशन दारू नहीं पी रही बट इट्स स्मोकिंग एंड इट्स स्मोकिंग वीड अ हेल अ लॉट। कि वीड करने से होता क्या है एंड व्हाट आर द कॉन्सिक्वेंसेस एंड व्हाट हैपेंस टू योर बॉडी एंड ऑल दैट स्टफ। सो लेट्स गो, लेट्स स्टार्ट। When a person is smoking cannabis, one of the plant's chemicals known as THC passes from the lungs into the bloodstream. The THC is then carried by the blood to the brain, where it acts on specific cannabinoid receptors. These receptors are found in areas of the brain associated with concentration, thinking, time perception, coordination, memory, and sensory pleasures. सो ये जो टीएचसी है जो कि वीड से निकलता है वो जाके हमारे कुछ रिसेप्टर्स कुछ सेंसर्स को जाके उनके साथ मिक्सअप हो जाता है। The effects of THC activation in these areas is responsible for the high that people feel. But besides creating an altered state of mind, something else happens. In the United States, according to a 2018 survey, 1 in 8 adolescents aged 12 to 17 consumed marijuana in the past year. In 12th grade, about 1 in 16 do so daily. So what? सी दिस इज द थिंग ब्रो, दिस इज द थिंग। मतलब अभी तो वो फिर भी पहले का टेस्ट हुआ था। अभी तो मैं बोल रहा हूँ कि अगर 10 बंदे हैं तो उनमें से 5 बंदों ने जरूर कर रखा होगा इन द एज ऑफ 12 to 17, आई बेट। What's the problem? Even super smart people smoke, right? Let's look at the effect of cannabis on a teenager's brain. The brain's response to counter the effects of THC impairs its attention, its ability to remember, and its potential for learning. These are देखो, अटेंशन हाईजैक करता है तुम्हारा। दूसरा, तुम्हारा एबिलिटी टू रिमेम्बर, तुम चीज़ें भूलते हो, मतलब मेमोरी लॉस। एंड ऑल्सो व्हाट वाज दिस थिंग, एंड द पोटेंशियल ऑफ लर्निंग। मतलब तुम्हें ऐसा लगता होगा कि तुम ज़्यादा एक्टिव हो जाते हो या फिर तुम ज़्यादा जल्दी चीज़ों को याद कर पाते हो, ज़्यादा जल्दी सीख पाते हो, लेकिन ऐसा होता नहीं है। इनफैक्ट marijuana जो है वो हाईजैक कर देता है तुम्हारे पोटेंशियल ऑफ लर्निंग को, तुम्हारे पोटेंशियल ऑफ लर्निंग को नर्व कर देता है। These effects can last up to several days. This would not be such a problem if our brain ran like a machine, but that's not the case. The brain is a living organism, maybe the most precious one there is. In teenagers, that organism is still immature. It takes about 25 years for the human brain to be fully developed. सो इस वीडियो में ना स्पेशली टीनेजर्स की बात हो रही है, क्योंकि टीनेजर्स पे ही फोकस करने की ज़रूरत है, क्योंकि दे आर वन ऑफ द पीपल हु कंज्यूम marijuana द मोस्ट। एंड ऑल्सो उनको ही नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर हमने उनको सेव कर लिया तो ऑफ कोर्स हमारा एक जनरेशन बहुत सुधर जाएगा। व्हाट हैपेंस व्हेन अ जनरेशन इज ऑन द गुड लाइन, ऑन द स्ट्रेट वे, ऑन द स्ट्रेट पाथ, ऑन अ गुड पाथ। This is why when teenagers and adults argue, they often come to different conclusions. There is a biological reason for that. Adults have a fully developed prefrontal cortex, the part of the brain that is responsible for judgment and an awareness of long-term consequences. The cortex of teenagers is still growing. They are more influenced by their already matured limbic system, which responds to fears and emotions. If the सो जो बड़े लोग होते हैं उनकी लंबे लॉन्ग टर्म सोचने की कैपेसिटी और कैपेबिलिटी क्वालिटी भी ज़्यादा होती है, क्योंकि उनका जो ब्रेन का एक हिस्सा होता है वो बहुत अच्छे से डेवलप्ड हो चुका होता है अपने फुल पोटेंशियल पे, लेकिन टीनेजर्स का नहीं होता। एंड दैट इज़ वाई इट कैन लीड टू अ प्रॉब्लम, क्योंकि वो लोग ज़्यादा मेच्योर होते हैं तो दे नो कि व्हाट्स बैड फॉर देम, व्हाट्स नॉट। टीनेजर्स वो थोड़े से डम्ब होते हैं। developing brain is exposed to a lot of THC, the part responsible for controlling emotions may never reach its full potential. This can have long-term consequences and effects on one's measurable intelligence, learning, and judgment.
One study that followed 13-year-olds for 25 years has found that those who regularly consume marijuana lose on average 5.8 IQ points by the time they reach adulthood. Bro, तुम अपने IQ पॉइंट्स लूज करते हो लाइक लेट तुम लोगों को पता है लगता है कि अगर वो लोग marijuana वीड करेंगे तो वो लोग स्मार्ट हो जाते हैं उनका दिमाग अच्छे चलता है लेकिन ऐसा नहीं होता इट्स क्वाइट द ऑपोजिट you fucking lose 5.8 points of your IQ and average IQ is I guess 80 I guess or 100 यहाँ पे लिखा हुआ है Since our average IQ is just 100, that is enough to shut the door to a good college or close the opportunity to work at a great company. But that's not all. There is also evidence that some teenagers that use cannabis are at higher risk of developing depression or even a psychosis. लोगों को लगता है कि स्मोक करने से वीड करने से उनका डिप्रेशन क्योर होता है लेकिन द रिजल्ट्स हैव अ होल डिफरेंट थिंग टू से उल्टा डिप्रेशन बढ़ जाता है ब्रो ऑफ कोर्स A psychosis changes the way the brain processes information and causes you to lose touch with reality. You can see and hear things that aren't real and may completely lose your mind. In short, the high of cannabis comes with a multitude of side effects. Some might be fun, some might be healing, and some are potentially horrible. We देयर आर डिफरेंट मतलब reactions you might feel different things some way though some might be fun some might be dangerous don't always know. If you want to live life with the ultimate learning machine inside your head, you might want to wait until your mind is fully developed before trying weed. What are your thoughts? Did you ever try cannabis as a teenager? And if so, do you think it did damage to your mind or not? Please share your experiences in the comments below. please share your experiences in the comments below